Yeah, good morning, guys. Good morning to one and all. I hope I am audible and visible to you guys. And now let's start with this next session today. Yeah, I'm Delhi. Yeah, from yesterday, I'm seeing this message. Tushar Saki Jai Ho. Thank you very much. But why I don't know, understand why this praises to me. But thank you very much. To Jatin sir, who initiated this campaign. Tushar Saki Jai Ho. Thank you very much. Yeah, should we start now? Perfect. Start करें. Good. Chali. So let's start with the topic now. Yesterday we were doing the article number 14. If you remember, article number 14 we were discussing, and we discussed the concept of right of equality. And I told you two basic points: equality and equal protection of law. These two things I have taught you yesterday: equality before law and equal protection of law. What was equality before law? So I told you that be it Sachin Tendulkar, be it the Amitabh Bachchan, be it Tushar Pade, be it anyone, every person in the front of law is same, is having equal rank. So law किसी को कैरी करता, किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देता है. ठीक है, ये बताया था मैंने आपको कल. फिर हमने बात की थी अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, एंड इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अराउंड फॉर हाफ एन आवर. हमने हाफ एन आवर तक डिस्कस किया था, और तब आपको हमने क्या समझाया था? आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ दैट बार चार्ट, जब मैंने बताया था कि अगर मैं बात करूँ फीमेल की, मेल की, तो logically we say in the market, yeah, in the economy, that okay, male females are equal, but in reality there is some gap between male and female. Physically थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, और ऐसे में सेफ्टी के मैटर आ जाता है, और ऐसे में लॉ ने हमेशा क्या किया हुआ है? फीमेल्स को क्या दिया हुआ है? एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया हुआ है, एक्स्ट्रा राइट्स दिए हुए हैं, रिजर्वेशन दिए हुए हैं. एंड दैट इज अ प्रोविजन दैट ओके, इफ द पीपल आर लाइक दिस, देन ओके, डू समथिंग दैट बोथ पीपल विल कम इन दिस रेंज. Right, this is the beauty of the topic called as the equal protection of law. And not only male female, Hindu Muslim में भी ऐसा हो जाता है, SC ST में we have the provision. Then I told you about the handicap. I have even showed you yesterday that concept of I hope you remember the CACET brochure. I have showed you that also, CACET brochure, and in that also we have seen that whenever student applies for CACET, there is an exemption list different. So this is all about the concept of equal protection by law, right? So this was all about yesterday, which we discussed. Article number 14 we have covered. Now article 15 we will do, and very important, understand, prohibition of discrimination on grounds of religion, race. This one, so 15(1) prohibits, now listen carefully, 15(1) prohibits state from discriminating against any citizen on grounds only of this 6 point, actually not 6 point, there are basically 5 points. So which are the 5 points? One is called religion, second one is race, third one is caste, sex and place of birth, and 6 cases any of them. Now I am giving you a task, read this line, first line, read this first line, and can you tell me which is the main word in this first line? सबसे बड़ा word कौन सा उस first line में? सबसे important word. Let me see. Article 15(1) prohibits the state from discriminating against any citizen on grounds only of, और नीचे में 5 बातें दी हुई है, 6 दी हुई से, पर 5 ही मानेंगे. आई एम आस्किंग यू, इन दिस स्टेटमेंट, द येलो लाइन, हाईलाइटर मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, इन दैट येलो हाईलाइट, विच इज द मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट? कैन यू टेल मी विच इज द मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट? टिल दैट आई विल सिट, थोड़ा सा आराम से बैठ जाता हूँ मैं भी. जी बताइए. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आंसर्स. हाँ चलिए, आर्टिकल 15(1) में कैन यू टेल मी विच इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइन? Article 15 prohibits the state from discriminating against any citizen on the grounds only of the 5 words religion, race, caste, sex, place of birth. 6 तो छोड़ दो, any of them हो गया.
अच्छा, आप अभी आंसर फिलहाल नहीं दे रहे कई लोग. लेट्स से आई एम अ यूनिवर्सिटी, मैं एक यूनिवर्सिटी हूँ, मैं हूँ डी यू जानते हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, आई एम डी यू, आई एम दिल्ली यूनिवर्सिटी. नाउ इन डी यू वी हैव अ कंसेप्ट. मैंने बोला कि पहले हु विल गेट द एडमिशन, द पर्सन हु स्कोर्ड मोर देन 90%. देन सेकेंड लिस्ट खोली जिसको कितने मिले होंगे, मोर देन 80. एंड देन रिमेनिंग पीपल यहाँ आएंगे, प्लस दे नीड टू गिव डोनेशन. But who will get, the person who scored more than 90%, he will get the scholarship also. क्या ये नहीं क्या ये पॉसिबल है? DU is discriminating. DU is discriminating. दिल्ली यूनिवर्सिटी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. 90% बच्चों को अलग, 80 को अलग और रिमेनिंग लोगों को अलग. क्या ये सही है, गलत है? इज इट राइट और रॉन्ग? इल्हान सेइंग डिस्क्रिमिनेटिंग, हेतवी सेज नो डिस्क्रिमिनेशन. प्लीज बी क्विक. हाँ, बी जल्दी रिप्लाई करा करो आप, बिकॉज आपके रिप्लाई पर मेरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. आई एम आस्किंग यू वन इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट, वन इंपॉर्टेंट वर्ड. Jatin says no discrimination, Basudev says discrimination. So we have 4 answers. 2 says no discrimination, 2 says discrimination. Quickly, why you are taking so much time, I don't know. Why you are taking so much time to reply? Okay. ठीक है. Anyways, I don't know why you are not replying. Fine. So let me tell you, the main word in this whole statement, the main word is only. The main word is only. The main word is only. ठीक है, main word is only. Right? Article 15 prohibits the state from discriminating. But the state will not discriminate against any citizen on ground only of. So what the main word is only. Hetvi, good Hetvi. Hetvi ने बहुत अच्छा आंसर दिया. डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हुआ? 5 points में कुछ नहीं आता. Yes, only 5 points. Only of religion, race, caste, sex, place of birth. इसके अलावा कुछ और की बात नहीं की हुई है. द मेन वर्ड इज ओनली. ओके, इन दिस क्लास ऑल्सो इफ आई से लेट्स से आई एम अ स्टेट, अज्यूम करते हैं तुषार पहाड़े क्लासेस स्टेट है, जस्ट एग्जांपल लेने के लिए. लेट्स से टीपीसी इज अ स्टेट एंड आफ्टर दिस क्लास आईड से कि मेरे पास कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल 20 बच्चे पढ़ रहे हैं. 20 में से 10 लोग थोड़े से एवरेज है और 10 लोग जो है वो थोड़े स्मार्ट है. सो इन लोगों को मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, बट फॉर दिस आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास. ये अलाउड है, नॉट अलाउड? इज इट अलाउड, नॉट अलाउड? एक्स्ट्रा क्लास फॉर विच पीपल, दोज पीपल हु आर बिलो एवरेज, थोड़े डम्बो समान है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ जल्दी से. तो ऐसे भी 10 लोग हैं मेरे पास और 10 लोग स्मार्ट है, तो नो नीड टू हैव एक्स्ट्रा क्लास फॉर दिस पीपल. सो कैन आई से दैट आई ओनली टेक एक्स्ट्रा क्लास फॉर दिस 10 पीपल? Yes or no? Answer is yes, I can say, provided I am a state. So what I am trying to say, I can do any type of discrimination. But if I say, let's say I can see the name Ilhan, I don't know Ilhan Muslim है कि नहीं. Ilhan, please confirm if you are Muslim or not. So let's say Ilhan is Muslim and I say कि Ilhan तुम मेरे क्लास में नहीं बैठोगे because you are Muslim. Can I say like this if I am a state? No, because I am discriminating on religion. Right? Yes. Ilhan ने confirm किया, तो yes. If I say Ilhan like this, it is discrimination. If I say Garima,
Likita, Isha, you all should not reply because all these people are female. And Ilhan, you can say, Jatin, you can reply, and Krishna, you can reply. Boys will do, but girls should not reply. Discrimination on the basis of sex or place of birth or like this. So law says, please understand, Article 15 is very simple. It says no state will discriminate between people, citizens of India, on the ground only of, the main word is only of, and which are only of 5 words. Which 5 words? First is religion, race, caste, sex, place of birth. It indirectly means, when I am saying only means these 5 words, it indirectly means, can I discriminate on any 6th point? Yes or no? Quickly tell me. I means, can a state discriminate on any other 6th point? Yes or no? A state can discriminate on any other 6th point. Yes or no? A state can discriminate on any other 6th point. Can they discriminate on any 6th point? Can they discriminate on any other 6th point? Yes. Yes, Adesh, Sapna, Isha Agrawal, good. So yes, they can discriminate on any other 6th point. They will not discriminate on 5 points. And then, yes, we have a concept of DU. Any university, they have a concept that they give scholarship only to which people? To the studious people. Is it discrimination? No, sir. They can do. Right? Every state can discriminate, but they will not discriminate. Again, I will repeat on these 5 points. Which one? Religion, race, caste, sex, place of birth. But now we have some exceptions. Now tell me, before telling exception, just tell me, do we have any discrimination on the basis of sex? कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, क्या इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एंड सेकेंड इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, जनरल कैटेगरी एंड SC ST. हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या ये 2 पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेशन होता है नहीं होता है? रियल, आई एम आस्किंग यू रियल लाइफ. Have you seen discrimination on basis of male female? Are females given extra privileges? Are the people who belong to SC ST are given extra privileges? Yes or no? Have you seen this in the economy? I have even told you yesterday also. Yes, सब लोग हो रहा है. ठीक है, क्यों हो रहा है? Please understand this line. क्यों हो रहा है? तुषार पहाड़े ने बोला इसलिए नहीं हो रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड. आर्टिकल 15(2) lays down that no citizen shall be subjected to any disability, restriction or condition in regard to. ठीक है, किसमें बोला सुनिए अच्छे से. एक्सेस टू शॉप, ठीक है, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, वेल, टैंक, bathing hut, road, place of public resort, everything made out of, understand the main word, maintained out of state fund. Let's say tomorrow I make a hotel. Let's say everyone knows a very famous hotel, Radisson Blu. Now understand an example. Like Radisson Blu denied 2 people the entry. One is Ilhan, just Ilhan, don't take it another way. Ilhan, and other one is Hetvi. Why they have denied Ilhan? Because Ilhan is Muslim. And why Hetvi? Because she is girl, female. Can Radisson Blu do that? Can they do such discrimination? Quickly tell me. Yes, no. Basudev says no. सबसे पहले रिप्लाई वासुदेव को आता है, बट वासुदेव इज ऑलवेज गिविंग रिप्लाई ऑन इमोशनल बेसिस. आई हैव सीन वासुदेव रिप्लाई ऑलवेज, बट ही इज ऑलवेज गिविंग ऑन इमोशनल बेसिस. Adesh, good answer Adesh. They can. Likita, yes, good. Why Ilhan? Why Ilhan says no.
दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. वाई इलान, वाई यू थिंक सो? इलान को ऐसा क्यों लगता है? जतिन बोलता है कर सकता है, गरिमा बोलता है कर सकती है, गरिमा बोलती है सॉरी, ईशा बोल रही है, सब लोग बोल रहे हैं. यस, सब लोग बोल रहे हैं. आई गेस यू आर गेटिंग वीडियो लेट. आई गेस एक बार सब लोग रिफ्रेश करो वीडियो को, आप लोग रिफ्रेश करो, बिकॉज आपको मेरा वीडियो लेट दिख रहा है शायद, एंड दैट्स वाई आप लोग लेट कर रहे हो. रिफ्रेश करो सो दैट आप लाइव बराबर में आ जाओगे, ठीक है ना. आंसर इज यस. रेडिसन कौन है सर? एक प्राइवेट होटल है, प्राइवेट होटल है. बट इसी जगह पे इफ आई यूज द वर्ड एमपी टूरिज्म और APRCTC, APSRTC, I guess it is. श्रीनाथ सर, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कंफर्म करो. इन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, डू वी हैव द स्टेट कॉर्पोरेशन, रोड कॉर्पोरेशन, विच इज कॉल्ड एज APSRTC. इलान, गुड इलान, चलो कोई बात नहीं. डोंट से सॉरी, यू नीड टू डू मिस्टेक राइट नाउ. आफ्टरवर्ड्स आई विश कि आप मिस्टेक्स बाद में ना करो, राइट. द पीपल हु बिलोंग्स टू हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, कैन यू टेल मी, डू यू हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड APSRTC? आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. और एवरीवन हैव हर्ड अबाउट MP टूरिज्म, है ना. MP गजब है, अजब है. MP टूरिज्म इज वेरी फेमस, राइट. यू हैव गुजरात टूरिज्म ऑल्सो, गुजरात tourism. You know who is the brand ambassador of Gujarat tourism? Brand ambassador of Gujarat tourism. Many people are aware. Many people are aware. Gujarat tourism. Amitabh Bachchan. Good. Amitabh Bachchan. And let's Amitabh Bachchan या Gujarat tourism says, कभी तो गुजारा कुछ दिन गुजरात में, but they says आओ गुजरात में आओ, लेकिन मुसलमान मत आना, सिर्फ हिंदू आना. Can he say like this? Can Gujarat tourism say like this? No sir, they can't, because Gujarat tourism is what? A state. Yes or no? Gujarat tourism is a state. MP tourism state. APSRTC state. Garima saying it is TSRTC, maybe Telangana state. Okay, maybe Telangana हो गया होगा, but I know about आंध्र प्रदेश, जहाँ पे आंध्र प्रदेश है वहाँ पे वो भी चलता है, ठीक है, APSRTC. Anyways, because I went to Tirupati, तो I remember that Tirupati में we have a buses called as APSRTC. That's why I thought that हैदराबाद में भी वो होगा करके. But anyways, MP tourism government organization, Andhra Pradesh government organization, Gujarat tourism government. Can they discriminate? No. Everyone gave a good answer. No. But can Radisson Blu discriminate? Yes sir. Can Radisson Blu discriminate? Yes sir. Private hotel. Can Oberoi's, Taj, all this can discriminate? Yes sir, because they are big hotels, they are private hotels, they can't do. Are you getting my point? So again understand, who will not able to do that? Shop, public restaurant, hotel, everything of public entertainment, and well, tank, bathing ghat, road, place of public resort, all these things, but maintained out of state fund. And now we have some exceptions also. I told you we have some exceptions. Exceptions to whom? Please understand. 15.1 and 15.2 we have understood, but then we have special provision for women and children. And that is why, though we have studied for 15 minutes, last 15 minutes what I have told you, do not discriminate on basis of these 5 points: religion, race, caste, sex, place of birth. But then they have discriminated because there is an exception towards women, and there are law. Please understand this line: the court have upheld the validity of legislation or executive discriminating in favor of women. Are you getting my point? In favor of women. So we have a ladies special, ladies coach, that's okay. But let's say we make a general coach where मेंस कोच ऑनली, जहां पे सिर्फ आदमी लोग चढ़ेंगे, एंड जनरल कोच पे कोई भी चढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता. वी कैन नॉट मेक प्रोविजंस इन फेवर ऑफ मेन. रीजन नोन टू एवरीवन. जितने भी बच्चे वीडियो देखे सबको पता है ये रीजन. व्हाई नॉट? बट व्हाई दिस? बिकॉज इट इज क्लियर कि लॉ सबके लिए बनाए गए हैं यहाँ पे, और वुमेन के लिए एक्सेप्शन है. एंड ऑल्सो स्टेट हैज गिवन एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, जिसमें कि SC ST भी आते हैं.
Great, Basudev. What Basudev is saying, very good answer. Sir, if private hotel have right to do anything according to their will, but if they discriminate on the basis of this, they will be forced to shut down and they will lose goodwill. Bilkul yes. What I am teaching you law. I hope आपने शायद मेरा वीडियो डे वन से देखा नहीं है वासुदेव. I hope you have seen my video from day one. I'll repeat one more time. Can Tushar Pahade? I'll repeat one more time. Can Tushar Pahade, if he start daily कि मुस्लिम लोग मेरे क्लास में नहीं बैठेंगे. My question was, can you file a case on me? And point number 2 is, can Ilhan and other people, can they boycott me? Can they say in the whole economy that Tushar Pahade is doing all these things? Can they say yes, because of this they will what to say, defame me? Everyone, सिर्फ इल्हान नहीं, सभी लोग, तुषार पहाड़े खराब आदमी है, वो सिर्फ हमेशा मुस्लिम के बारे में बुरा बोलता है, हर बच्चा मेरे बारे में बुरा बोलेगा. And what will happen? I will lose goodwill. I will lose my brand name. From next day, people will not study from me. Everything is okay. I am asking you, can you file a case on me? My question is something else. Do you have a fundamental point to find a case on me? My question is something else. Basudev Mishra, yes. Good, Basudev. I hope you understand and keep putting questions, because questions should be very important and you need to reply. You need to ask actually. My question is simple. If I do this thing that लड़कियाँ नहीं बैठेंगी मेरे क्लास में, I hate girls, I am a male chauvinist person, ये वो मैं कितना ही बोल दूँ, what will happen? From tomorrow no girl will study from me. All the girls will file a they will defame me. तुषार सर खराब आदमी है, लड़कियों से ऐसे गंदी बातें करते हैं, लड़कियों को बुरा, गंदी बात मतलब ऐसे कि मतलब नहीं पढ़ाना है, ऐसा मत बोलना भैया. हाँ, तो कुछ मेरे बारे में बोल देंगे. But my question is, can they file a case on me on the basis of this? Tushar is discriminating. No, because Tushar Pahade is a private authority. So understand my point. आप मेरे बारे में बुरा बोलो, जो करना कर लो, केस नहीं कर पाओगे. बट सर अगर यही काम कौन किया? If same thing did by Gujarat Tourism, can you file a case against that? Yes sir. Directly Supreme Court. That's the beauty of the topic which I am teaching you, right? I hope you understood now. So this was all about 15, Article 15(1), right? 15(1). If we talk about Gujarat tourism or all this thing, 15(1)(2) में हमने पढ़ लिया. 16 is very much common. 16 is copy paste. Equality of opportunity in matters of public employment. Equality of opportunity in matters of topic is very same. What is the difference between 15 and 16? 15, 16 में difference क्या है? 15 is public places की बात हो रही है and 16 is a public employment. Let's say in my BML, Hithvi, I will reply to that question later on, because that is not right now topic, because it is a system of the court. I will tell you later on. We will have a discussion on that, because that you are talking about a rape case and that is something different. Right now we are not talking about that. I will come to that later on. Okay. BML. Let's say BML have 4 employees and I don't prefer female employees. I only prefer male person. Can I do that? Yes sir. Because again BML is what? A private organization. But if let's say LIC, RBI, all these organizations, they need to understand and manage between the what? The Article 15 and 16. LIC, RBI, all this thing. Right? That is why I am telling you all this thing. So please understand what I am teaching you in this article number 16. What is 16? This says all citizens equality of opportunity in the matter of relating to employment or appointment of offices under the state. I am talking about which offices? State offices. Employment of public job, government job.
maybe any job in central government, right? Central government, sorry, CG. What happened to this? CG, SG or LG, right? CG, SG or LG, local government, state government or what? Central government. If any there is a case of these three governments, then definitely you cannot discriminate. But can Tushar Patil discriminate? Again question will be same, answer will be same. Yes, I can discriminate. Why? Because I am a private organization. Simple answer. I can only hire Muslim people in my organization. That's perfect, all right. I can only hire Brahmin people. That's all right. Now, if you see, all the words are same, but we have some extra words here. Look, religion, race, caste, sex, and place of birth is okay. Now we have two more words here. Descent and residence. Descent and residence. And if you see, if I show you something in the Google, yeah, let's go to Google and I'll show you Himachal Pradesh news. Which news I want to tell you? 1 minute. What happened? Which news was there? 1 minute. This one, sorry, Haryana. Sorry, I was mistakenly typing the word Himachal Pradesh. It was Haryana. It was the latest news. If you can see, which one is that? 17 hours ago. I hope you can see 17 hours ago. And what's the news? They say Haryana draft ordinance to reserve 75% private sector jobs for local. Now read this line, very important line. It was the news of NDTV. What is this? Arey yaar. This is the news of 7 July. Today's news, latest news. And if you can see, Haryana draft ordinance to reserve 75% private sector jobs for local. I hope you can see this. Are you getting my point? Now, is it right or wrong? Is it right or wrong? Haryana draft ordinance to reserve 75% private sector jobs for locals. Akshay sir, we have girls and boys college separately. Okay, for this we will study in article number 2930 when we have educational right. Right? Okay, Haryana drafts ordinance to reserve 75% private sector jobs for local. It's the news of yesterday only, and very good topic we are studying today. I want you to kindly tell me the logic. Okay, again we have some exceptions. Some exceptions, listen to me. However, there are certain exceptions, right? What are the exceptions? Read these 3 points. Parliament can make law in regard to class or class of employment. Class or classes of employment. Class or classes of employment, right? Of government or state or union territory, any local authority and local authority, whatever. Very important line this. A provision can be made for reservation of appointment or post in favor of any backward class. We can always have a backward class. That's why if you see the LIC, RBI or any government organization, they reserve a seat for SC, ST people. Why? Because of this point, right? And this point is very important.
Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in the matter of promotion with consequent seniority and all this thing of scheduled caste, scheduled tribe. Okay. And this one is very important. Nothing shall be in the article shall prevent from considering any unfilled vacancies of the year which are reserved and which can be filled up by any other number. You can always, if there is vacancy, you can always fill with the numbers of other people, other category, right? That is also simple point. 55th point is very important. A law shall not be valid if it provides that incumbent मतलब the prospective employee जिसको job करनी है, right? With any affairs of religious, understand this word, underline this word, religious or denominational institution. Religious or denominational. Let's say we have very two famous board of trustees. Board of trustees. One is Tirupati Balaji, and second is Ajmer Sharif. Now listen to me and give me the answer. Board of trustees are there. Board of trustees are there. And they, I hope you know Balaji Bhagwan, Ajmer Sharif ki dargah, and board of trustees there. And Tushar Pahade, they have approached Tushar Pahade to be a trustee in Ajmer Sharif ki dargah. Can I be appointed as that or not? Board of trustees of Ajmer Sharif, there are around 11 trustees in Ajmer Sharif, and they want Tushar Pahade to be part of this trustee. Can I become the trustee of Ajmer Sharif? Yes or no? Adesh says yes. Okay. Keshav bolta yes. Okay. Yes, 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 yes. Everyone is saying yes. Adesh is giving very beautiful answer. If both are ready, then what the problem? है ना? मियाँ बीबी राजी तो क्या कह रहा है काजी? जब दोनों को तकलीफ नहीं तो तुमको क्या तकलीफ है ना? ऐसी वाली बात हो गई. तकलीफ तो है बेटा. तकलीफ बहुत लोगों को होने वाली है. तकलीफ बहुत लोगों को होने वाली है. तुषार पाड़े इज हिंदू. I have been appointed as a trustee of Ajmer Sharif. Do I know the Muslim background, everything? क्या मैं खुद मुस्लिम हूँ? क्या मैं मुस्लिम हूँ? मुझे पता है अजान कैसे पढ़ता है. आपको पता है अजान कैसे पढ़ता है? इल्हान को शायद पता होगा. इल्हान शायद नहीं, इल्हान को पता ही होगा. बट क्या मुझे पता है अजान कैसे पढ़ता है? कुरान क्या होती है? हाँ सर कुरान सुने हैं, गीता सुनी है, कुरान सुनी है, बाइबल सुनी है. कुरान पढ़ी है आपने? अगर आप उस ट्रस्टी के उस पर ट्रस्टी बनना चाहते हो, मेरे को क्या समझता है? जस्ट बताइए मुझे. व्हाट आई नो अबाउट द ट्रस्टीशिप, व्हाट आई नो अबाउट मुस्लिम लॉ, व्हाट आई नो अबाउट दैट. एंड इफ शाहरुख खान बिकम्स अ ट्रस्टी ऑफ तिरुपति मंदिर, शाहरुख खान, अरे सर बहुत बड़ा आदमी है, अरे होगा बहुत बड़ा आदमी, खान है, खान मुसलमान है, तो सर मुसलमान को आप मना कर रहे हो? नहीं सर, तिरुपति में मना कर रहा हूँ. उल्टा कर लो सर, तुषार पाड़े को यहाँ भेज दो, एसआर को यहाँ भेज दो, चलेगा. बिकॉज एसआर के मुसलमान है एंड ही नोज मुस्लिम लॉ बेटर, तो ही विल बी डूइंग जस्टिस इन अजमेर शरीफ एंड तुषार पाड़े कैन डू जस्टिस इन तिरुपति मंदिर. बट सर व्हाट इज दिस? हाउ कैन एसआर के डू जस्टिस? आप आदेश ने जो बोला ना, बहुत अच्छी लाइन बोली कि सर आप लोगों को तकलीफ नहीं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत लोगों को होने वाली है. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इफ इट इज अ हिंदू बोर्ड, there should be a exception. यहाँ पर equality नहीं हो सकती. यहाँ पे only who will appointed? Only Hindus. In Ajmer Sharif, only Musliman. If I am not a Christian and if any church, understand, if any church approach me, तुषार सर आप इतने लोगों का उद्धार करते हो, इतने लोगों को पढ़ाते हो, can you become father of the church? I say very good, why not? Why not? क्या लगता है? एक वो वाइट कपड़ा पहनना पड़ता है ऊपर में, वो टोपी पहननी पड़ती है, वो एक वो लगाना पड़ता है प्लस वाला है ना, 2-3 आइटम लगा लेंगे अपन खड़े रहेंगे.
गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। अच्छा धंधा है। चर्च वाले ने बुला लिया, तुषार पहाड़े फादर बन जाओ, अपन चले फादर बनने। यस और नो, है ना? चलो, क्या कर रहा है आज बैठे बैठे, क्या करे, करना है कुछ काम, चलो बन के आते हैं फादर लेके प्रभु का नाम, चलो फादर बन के आते हैं। मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। तुषार पहाड़े फादर बन रहा है, कोई क्रिश्चियन वाला मंदिर में पुजारी बन रहा है, क्रिश्चियन मंदिर में पुजारी बन रहा है, वो लोग हाथ नहीं जोड़ते, उनकी प्रेयर अलग होती है। एंड यू वांट टू बिकम अ प्राइस्ट इन अ टेम्पल। सर क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे सर? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय दिस एग्जांपल्स, ऐसा क्रॉस नहीं हो सकता। कोई भी बंदा कहीं भी घुसे जा रहा है। एंड देन वी हैव अंडरस्टैंड लाइन दिस वर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट पैराग्राफ। अ लॉ शुड नॉट बी इनवैलिड, लॉ विल नॉट बी इनवैलिड, लॉ विल नॉट बी इनवैलिड मतलब लॉ विल बी वैलिड, law will be valid if it provides that the incumbent of an office with the religious or denominational institution shall be a person professing a particular religion. That person should belong to that particular religion or belonging to a particular denomination. You need to be of that particular religion. तो अगर मुझे कल जाके अगर मुझे पोस्ट है प्राइस्ट की, मतलब किसकी? पुजारी की, तो वहां पे पुजारी कौन होना चाहिए सर? हिंदू। अजान जो होता है, सुबह की जो अजान होती है मुसलमानों में, जो नमाज पढ़ने में जो नमाज अदा की जाती है, जो काजी होता है काजी, वो कौन होना चाहिए सर? वो मुसलमान होना चाहिए सर। एक चर्च में जो फादर है वो कौन होना चाहिए सर? ही शुड बी क्रिश्चियन, ही शुड बी क्रिश्चियन। बस ये तो भेदभाव है सर? भेदभाव नहीं है, ये यही तो जस्टिस है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। हियर यू कैंट से कि हमको तो सर मना किया, नो, राइट। I hope you understood this complete provision. So these are some examples to understand article number 16. So I hope you understood this. 15. What was article 15? Article 15, 16, 17, 18. अच्छा 14 रह गया, सॉरी। 14, 15, 16, 17, 18. तो what was 14? 14 was, इसमें दो बातें थी। वन वॉज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड वन वॉज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट, ये हो गया। 16, 15, 16 दोनों में एक ही बात थी, क्या? यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और 16 में दो तीन बातें एक्स्ट्रा थी, द डिसेंट दैट इज लैंग्वेज वगैरह, या फिर दैट प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ में वो भी था, क्या बोलते हैं, रिलीजन वगैरह, ठीक है, उसमें भी था, वो भी बातें ध्यान रखनी है, उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। 17 हम लोग भी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अनटचेबिलिटी। ये तो बहुत ईजी है, अनटचेबिलिटी। एंड 18 इज ऑल्सो वेरी इजी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। 17, 18. So 17 is untouchability, very simple, and this is crime. This is crime. Untouchability is abolished. अच्छा, पहली बात तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अनटचेबिलिटी, वेरी सिंपल इंग्लिश वर्ड, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। एंड आई टोल्ड यू दैट मूवी लगान, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू। This one, if you know this player in the movie Lagan,
Dhoni. Stumping like Dhoni, right? Stumping like Dhoni, right? Okay, anyways. So I hope you understood this example, why I have shown you this example. That bowler, जो bowler था ना कचरा, that bowler was belonging to the backward category. I told you yesterday also, that was a scene of that. And then when he used to bowl, then everyone in the society, they used to say, अरे इसको मत रो अपने टीम में, ये तो कचरा है. कचरा मतलब waste. These were a culture many years back. But when we made Constitution of India, that thing has become an offense now. Offense now. Now understand now very important thing. If Tushar Patil doesn't give equality, if Tushar Patil doesn't go for Article 14, can you file a case on me? Answer is no. If I discriminate you in my classes or in my hotel, can you file a case on me? No. If I don't give you employment, if I give only employment to males or only female or only Hindus or Muslims, whatever I do in my BML, Tushar Patil classes, I can do anything. You can't file a case on me. And if same thing, if I say कि अरे इससे बात मत करो, कृष्णा से बात मत करो, ओम से बात मत करो, अनटचेबिलिटी, ये इनसे दूर रहो सर, इनको प्रॉब्लम है. If I do anything, can these people file a case on me? Can you all file a case on me? Yes sir. Yes sir. You can file a case on me, right? Are you getting my example? You all can file a case on me. Let me see one more example if I can show you. Okay, I am not able to see that. This one. I hope it is audible or no? चल क्या रहा है? So, मजाक हो रहा है क्या? मेरा Okay, now you will be able to hear this audio. एक्सक्यूज मी सर, हाँ, ये मेरा इस्तीफा. क्यों? सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर. ओके मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है. माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, ये रहे मेरे पेपर्स. तो दोबारा कीजिए फोन, मैं करूँ. हाँ, रेजिग्नेशन. यहाँ चेयर बहुत चुभती है सर. हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है. मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर. चल क्या रहा है? So, मजाक हो रहा है क्या? मेरा रेजिग्नेशन. क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा हूँ. आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन. भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं. मोहित, मेरा इस्तीफा. क्या है यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार. सॉरी यार. काम कीजिए आप लोग अपना.
HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। Right. So I hope you understood this example, this video. Yes. What is the idea behind this video? Why I have showed you this video? I hope you understood this example. And same thing is happening nowadays. If someone is corona patient, if you do such discrimination, I hope that ad is very simple, very much clear example to explain that if someone discriminate on anyone, that he is having leprosy or AIDS, or you can say corona these days, you can't do discrimination. If you do this today, it's a crime. So what I'm asking you this question, I was asking this question, if Tushar Pandey says that Krishna and Om are having leprosy, ऐसा वैसा कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, मार डालेंगे मुझे लोग मार डालेंगे, एंड आई वोंट बी एबल टू गिव एक्सक्यूज कि अरे नहीं चलता है करके. यहाँ पे ऑल थिंग यू कैन फाइल अ केस ऑन मी, बट दिस इज अ क्राइम. इट इज रिटन, इट्स ऑफेंस पनिशेबल अंडर द लॉ एंड इट इज अगेंस्ट द ऑल पीपल. एंड इवन इफ यू पीपल डिसाइड, then let's not talk to this person or ignore him or all this thing. It is something different, right? And do you think what is happening with Bollywood right now? Bollywood, Karan Johar, Alia Bhatt. I'm not in favor of these people. I'm just asking you, is it untouchability? No one will go and now watch the movies of Karan Johar or Alia Bhatt or Salman Khan. So is it untouchability? Is it boycott? Yes, it's a boycott. Is it untouchability? No, sir, it's not untouchability. Boycott is different thing. Boycott is different thing. Yes, it is neighborism. Yes, Vasudev. But I am not asking that. I am asking that when everyone in the country decides that we will not go to watch the movie of Alia Bhatt or Karan Johar or Salman Khan, is it the meaning of the word that you are having a concept of untouchability with Salman Khan? No, sir. It's not a concept of untouchability with Salman Khan or Karan Johar or this. If Tushar Pahad is teaching you, Vasudev was saying, याद है आपको वासुदेव ने क्या बोला था स्टार्टिंग में? तुषार सर, अगर आप मुस्लिम बार बार करेंगे तो वी विल बॉयकॉट यू. यस, यू कैन बॉयकॉट अस, बॉयकॉट मी. इफ यू थिंक तुषार सर आपने बार बार मुस्लिम बोला, हिंदू बोला, आप ऐसी बातें करते हो, लड़कियों के बारे में आप डेरोगेटरी बातें करते हो, हम आपसे नहीं पढ़ेंगे. हाँ, यू कैन बॉयकॉट मी, बट कैन इट बी कॉल्ड एज untouchability? No, it's not untouchability, right? So I hope you understood the meaning of the word untouchability, and it is also a crime and it is against equality, right? Perfect. And last one is title. Before going ahead, let's cover final word, title. What is the meaning of title? Title का मतलब होता है उपाधि. Title का मतलब होता है उपाधि. Putting some title before. In previous years, not years actually, decades, और decade भी नहीं बोलूँगा मैं, 100 साल पहले 1920s 30s में we used to use the word sir. Sir Don Bradman. If I just type again in Google, let me take you to Google. Sir Don, see, it is written Sir Don Bradman. You can see Sir. I hope you can see this. Sir Donald George Bradman. I hope many people are aware about Don Bradman. He was the best cricketer of the country in Australia, and that's why he was given the title as Sir Don Bradman. Now Sachin is the best cricketer of the world now. Can India give him Sir Sachin Tendulkar? Tell me, yes or no? Can Indian government give him Sir Sachin Tendulkar? And can India give him Bharat Ratna, Padam Shri? Can government give him Bharat Ratna?
Padam Shri, yes. But can governments call him Sir Sachin Tendulkar? Tell me now. Can Indian government call him Sir Sachin Tendulkar? Sir Amitabh Bachchan. Putting the word sir, not this sir. No. The title sir is not allowed. Title sir is not allowed. Right? But Bharat Ratna, Padam Shri, all this thing is allowed. Right? So what I am trying to say, let's come to the title now. Title. Article 18 is more a prohibition rather than a fundamental right. British government used to confirm to people like Sir, Raj Bahadur, Rai Saab, right? All these words were given in which duration? British. But Indian government, Indian people never liked that, because when you call someone Sir Sachin Tendulkar, what will happen? Sir Sachin Tendulkar will become the higher post. And बाकी सब क्या बन जाएंगे? चिल्लर. Now we don't talk about inequality, we talk about equality. That's why ऐसा नहीं मिलता, right? ऐसा नहीं मिलता है. But सर आपने तो सामने लगा दिया है. You write like this, CS तुषार पहाड़े. You have used this word. Now इसका कैसा? Why you are using this word? You are also using the title CS तुषार पहाड़े, Brigadier सूर्य प्रताप सिंह. ब्रिगेडियर सुना? ब्रिगेडियर, सार्जेंट, कॉर्पोरल. You have heard about this. It is your identity. So, but again I am putting the word CS in before. मैं CS लगा रहा हूँ सामने में. गलत है ना? तो गलत है. Understand this. No title not being a military or academic will be conferred. Not being a military or academic. It means military and academic are earned. Please understand. मैं ऐसे CS ही लगा रहा हूँ. मैंने CS की डिग्री हासिल की है. I have earned that. If someone is putting the word doctor, sir, he has studied that. He has studied that. Yes, Basudev, good answer. I have earned that. Or someone, if he's doctor, he has done MBBS. He has done MD. Something he has done, and then he is putting that word doctor or engineer or CA or CS like this. And military, sir, it has been given again. No one is putting, I am Brigadier Tushar Pahade. Not like this. Right? मालूम पड़ा मेरे दो चार दोस्त, मतलब अभी कल क्या हुआ कि 3-4 दोस्तों ने मुझे बोले तुषार अपने एरिया में मारापीटी हो रही है. There are some people who are fighting with us. So please you come. तो मैं गया and I went to that locality और मैं जाके सबको धो दिया. दन सबको 10-12 लोगों को मारा मैंने. Because I am a don of my area. And they were calling me, Tushar, the way you have removed the people who are trying to encroach our mohalla, our locality, you have removed them, all the people. So you are our Brigadier Tushar Pahade. And they all call me Brigadier. They all call me Major. So does it mean that I am a Major or Brigadier? No. अच्छा, yesterday someone asked me, तुषार बहुत सर्दी हो गई है. मैं बोला डिकोल्ड ले लो. ऐसे डिकोल्ड ले लो. Right? Then yesterday Jatin called me. Jatin called me, sir, बहुत फीवर है सर. मैं बोला क्रोसिन खा ले. Jatin called me. मैंने बोला फीवर है तो बोला क्रोसिन खा ले. Then Ilhan called me. मैं सर सर्दी खांसी हो गई, काम कर डिकोल्ड ले ले. है ना? ईशा से सर मुझे बहुत सर्दी है. मैं बोला डिकोल्ड टोटल ले ले. And all 3 people got what? Fit and fine. Next day. कल सब ठीक हो गए. एंड सबने बोला तुषार सर थैंक यू वेरी मच. बोला यार सब थैंक यू बोल रहे हैं, मतलब मेरे दवाइयों पे काम हो गया. तो टुमारो आई वांट टू स्टार्ट माय क्लिनिक. सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड अ क्लिनिक. आई स्टार्टेड अ क्लिनिक ओनली, डॉक्टर तुषार पहाड़े, बिकॉज आई कैन गिव एडवाइस टू द पीपल एंड सब लोग को अच्छा लगता है. मैंने अपनी क्लिनिक स्टार्ट कर दी. राइट. सो अब सर इससे अच्छा तो मुन्ना भाई तो भी ठीक था. आप तो मुन्ना भाई से भी गए भी थे हो, ठीक है ना. एनीवेज, सो अंडरस्टैंड दिस. एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल ये मिल सकता है बिकॉज यू हैव अर्न्ड दैट. तुषार पहाड़े ने ऐसे डॉक्टर वर्ड यूज कर लिया, ऐसे नहीं होता है.
पीपल कॉल मी ब्रिगेडियर तुषार ऑफ आवर मोहल्ला, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, राइट, ऐसे नहीं होता है. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. Foreign state. So if Sachin is not getting Sir Sachin in India, can he take from Australia or New Zealand? No, sir. Right. No person who is not a citizen of India, while he hold office or trust, accept without any consent of president any title from any foreign. अगर ambassador हो, even you are ambassador of, then in this case this law is right. So this is what is all the topic. So I go to the fifth point also, abolition of title. Have you understood title? Title matlab the rank, the status which has been given, which makes one person from other person separate or distinct, and this concept is not allowed in our country. You cannot do such discrimination in India. In India, but if you are having these two things, military and academic, these are two things which has been earned. If you are brigadier, sergeant, or you are marshal, whatever, so you have been earned that. You have been earned that. And then you can use that, and also academic thing you can use that. Otherwise that no one will get the titles like this, right? So I hope you understood this, and we are talking about this one, sir. Now Tushar is okay, sir Tushar is not okay. Tushar आपने बोल दी, that's okay, है ना, तुषार सर बोल दिए चलता है, सर तुषार बोलना wrong है, right? चलिए, so this was done. Now tomorrow we'll start with article number 19. We start with 19, in which we have 19, 1, A, B, C, D, E or G. Sir, F नहीं है. I know this by alphabet only. A, B, C, D, E और G. Sir, अरे F का क्या हुआ? F है ही नहीं. I don't know F. F है ना? So A, B, C, D, E, F, G. सर क्या मजाक कर रहे हो? यस, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है. तो ऐसे है, हमारे इसमें ई के बाद एफ आता है, तो एफ आपको ध्यान रखना है. बट मेरे हिसाब से अगर मैं आपको जब पढ़ाऊंगा यहाँ पे, व्हेन आई विल टीच यू टुमारो, आई विल टीच यू दैट वो एफ इज नॉट दैट एफ, इट्स ओनली ओके, एंड इन आवर कांसेप्ट इट इज ओनली एफ इज रिमूव, एफ आई हैज बीन मूव्ड नाउ, राइट. तो आई विल टेक दैट, कल बताऊंगा अच्छे से आपको मैं क्या है इसके बारे में. Right, so we stop here today now, and tomorrow we will discuss about the article number 19, and then 20, 21 we will discuss all these articles, right? Chalo. We'll end now. See you soon tomorrow. We'll study and cover tomorrow again 10 o'clock. Right guys? Bye bye, take care, and see you tomorrow at 10 a.m. when we'll cover the next part of our topic, that is article number 19, 20, 21, 22. Please revise this, everything which I have taught you. 5 articles I have taught you till yesterday and till now. So revise all the 5 articles which we have described. Bye bye, take care.